हाय दिस इज़ अश्वनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस लाइक माय डे वन एक्सपीरियंस व्हेन आई जॉइन Publicis Sapient. So it might help you when you are joining some company or Publicis Sapient. ओके तो क्या क्या गुडीज़ मिलती हैं, क्या होता है पहले दिन, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम सब देखेंगे. ओके सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम. ओके या तो फर्स्ट पॉइंट, पहले दिन क्या होता है. तो आई नीड टू मेंशन दिस एक्चुअली. जो पहले दिन वाली मीटिंग होती है वो बहुत बहुत लंबी मीटिंग होती है. लाइक वो 8:30 बजे से सुबह शाम को 6 बजे तक चलती है. बिकॉज उस पहली मीटिंग में लाइक लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन. लाइक देयर आर लॉट ऑफ पी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइक योर 10th 12th मार्कशीट एंड माइट बी समटाइम if you are joining as a experienced like me, so you need to submit your revealing letter or your experience letter. But in my case I don't have that time experience letter, so you can submit after some days also. If you are joining as a fresher, वो इतना लोड नहीं होता है. कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं. उसके बाद जस्ट लाइक चिल मारो. कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. ओके कुछ गेम्स होते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. ओके एक नया एक्सपीरियंस होता है. और जब फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो it's a like totally a different experience. I still remember when I joined my first company, because Publicis Sapient is my third company, so that experiences are like quite good. Okay so whenever you are joining a new company, you have a different experience. so जो ये सेशन होता है ज्वाइनिंग का Publicis Sapient में, ये 3 दिन चलता है. लाइक पहले दिन क्या होता है कि दे विल डू सम नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल. दूसरे दिन वो बताते हैं कि उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. तीसरे दिन लाइक दे विल मेक यू टू टॉक समवन, दोज आर हाई अथॉरिटीज ऑफ द कंपनी. दे विल ऑल्सो टेल यू लाइक व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ कंपनी एंड व्हाट हाउ दे आर वर्किंग. बट एक जो अच्छी चीज़ होती है, like on a first day they will assign you one buddy, the one person for you. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, whenever like you have some doubt, like you can go and ask like him or her or anything like how they are working, or if you want to share something, or if you have some doubt you can like share with them. okay और जब ज्वाइनिंग करने से पहले, जब ज्वाइनिंग होती है उससे पहले कुछ लाइक फॉर अ गुड साइन दे विल सेंड यू सम गिफ्ट फॉर यू. आई लव प्लांट्स, तो मुझे ये मिला लाइक फ्रॉम Publicis Sapient. इट मेंशन हियर आल्सो लाइक Publicis Sapient, राइट? या सो ये मिला. आई डोंट से लाइक आई लव प्लांट्स सो दे नो दे गिव मी दिस प्लांट. ओके नो लाइक अनफॉर्चुनेटली दे गिव मी दिस. ओके एंड the different people's got a different thing. so एक गिफ्ट मिलता है for a welcoming or something. okay and as this laptop that is from HP ZBook something. okay you're gonna get this and this one bag. This is one Lenovo bag and for carrying a laptop. Why I'm laughing and looking at this bag because I still remember this is a too good bag. okay because first time a company is giving us some nice good bag, but when I joined like that 2 companies, my previous company, most of the company provide me like पिट्ठू बैग होता है ना, लाइक जिसको टांग के हम स्कूल जाते हैं, जस्ट लाइक. और स्कूल वाला बैग उससे बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट मी. ओके बिकॉज लास्ट कंपनीज़ में जो बैग मुझे मिला लाइक वो ना मेरे रूम में ही रखा रहा था. मैंने कुछ नहीं किया है उसका. सो दिस इज़ अवर लाइक बहुत अच्छा है उससे. तो एंड दे गिव दिस Jabra headphones built in with mic. And to carrying this they had this case of carrying of this Jabra headphone. This is only this much now. We are talking about like 3 days of this joining formalities. उसके बाद project मिलने में like कुछ लोगों को instant project मिल जाते हैं. And if you are hiring for a particular project, you will get into the project
and if you are going for like if you're not specific for a project, it will take time like 2-3 days or 1 week to get into the project. Yeah, after that, yeah, all good. If you are good in skills, you will handle, because after all surviving के लिए तो like you need a skills, right? But whenever when I'm trying to switching from Cognizant to Publicis Sapient, like एक thought दिमाग में continuously चल रहा था. Like वो क्या था कि ये एज एन पैंडमिक टाइम एक अच्छा टाइम है स्विच करने के लिए या नहीं है. Because when I've seen like a lot of like articles and all, like Zomato is hiring, like Uber is hiring outside, and as well as like I saw the articles of hiring, but more article I saw for firing also. Like Accenture like firing a people's, like Cognizant too fire a people's. Okay, like one or two my friends got fired. बट जो मेरा एक्सपीरियंस है जो अब तक कह रहा है कि हाँ, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो यू आर इन डेंजर. ओके, इफ़ अगर लेआउट होता है या कंपनी फायर करती है तो देन यू आर इन डेंजर, बिकॉज आई सी पीपल्स दोज गॉट फायर्ड बिकॉज दे हैव अ नाइस एक्सपीरियंस. ओके, बट एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, मेरी वे ऑफ थिंकिंग क्या है कि हमें ना क्या प्रॉब्लम है कि ओके हम देखते हैं एक नेगेटिव साइड, बट पॉजिटिव साइड क्या है, जिस तरीके से कंपनी फायर कर रही है उस तरीके से कंपनी हायर भी तो कर रही है ना. लाइक ओके, इफ़ आई विल नॉट स्विच, ओके, हु आई विल नॉट वांट दैट ग्रेट एक्सपोजर एंड ग्रेट सैलरी एंड ग्रेट प्लेस टू वर्क, राइट. सो जब तक आप रिस्क लोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे, बिकॉज कुछ भी मांगने से तो नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है, राइट. या so I decided to switch. Then I got into this company like Publicis Sapient. Okay, but more things like मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, like when I'm in the college also and when I'm after working in this whole IT experience. अब होता क्या है, like okay, हम एक कंपनी में रिजेक्ट होते हैं, फिर हमें लगता है ओके अभी हमारे बस का नहीं है या हम नहीं करेंगे, बिकॉज मेरे दोस्तों से बात होती है और बहुत लोगों से बात होती है. लाइक जब आप स्विच करते हो, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आप स्विच करते हो तो आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे किया, कैसे ढूंढा, या क्या एक्सपीरियंस रहा, राइट. तो ये जो एक्सपीरियंस जॉइनिंग का है, इससे पहले का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. व्हाट आई थिंक दैट, लाइक वो तुमने प्रिपेयर कैसे किया है. सो इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके, कि कुछ भी होता है, लाइक आइदर आई गॉट अ सेलेक्टेड और नॉट, आई विल टेक इट पॉजिटिवली. So what in case, like होता है क्या है, generally people got rejected enough, like when they are preparing for a company they got rejected from like 2 or 3 company. They said okay अब हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, हमसे नहीं होने का है. So let me tell you one thing, if you are not trying something then things will not go into your favor actually. So just try hard. If you are good in skills, at the end of the day like everything come into you, okay, come for you. या दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग. सो ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट लाइक पब्लिक सेपिएंट का इंटरव्यू दिया और मेरा हो गया, ऐसा नहीं है. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल कंपनीज, इवन आई गॉट अ लाइक चांस टू गॉट इन लाइक Amazon and EPAM and 2 or 3 startups also. Yeah, I got a call from Accenture, but what happened there, like few times, like in a last round there is one startup, I don't want to take a name, okay, they rejected me in a last round, okay, without any reason, and EPAM rejected in me in last round, and yeah, after I got an offer, one company rejected me in a HR round. So ऐसा नहीं होता है कि okay अब आपके सारे technicals निकल गए, because you are good in skills, you have done competitive programming in your college, now you will do everything. Every skills is a matter, like जो तुमने previous में काम किया है, right, वो भी matter करता है, और तुम्हारी skills भी matter करती हैं क्या है. तो like end of the day each and everything got matter, like skills क्या हैं, okay, CP is important, I know that, like you will not have got a like clear your first round or second round without your data structure. So that is the most important thing. But whatever work you have done in your previous project, that is also an important thing. So but the last thing is that in the end of this video I want to say, if you are good in skills, right, you can do anything. Don't worry about it, like switch करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. And one more important thing, if you got rejected in one company, just take it positively, just try for next one, okay. Yeah, and in the last video I'm gonna say, like if you have something to ask me, if you have any questions, just comment it down, I'm happy to answer, okay. Yeah,
थैंक यू सो मच।